कैनस्लिम। ये टर्म सुनने में एक स्लिमिंग टी या एक स्लिमिंग बेल्ट या वेट लॉस का कोई शॉर्टकट टेक्निक या आइडिया देता है ना? लेकिन दोस्तों, Canslim has nothing to do with weight loss or slimming or any such thing. Instead, it's a stock market term, an acronym, very much like WIDE or LOL or ROFL. इसे यूज करके ट्रेडर्स ग्रोथ स्टॉक सिलेक्ट करते हैं यूजिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। समझाने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। मेरे बेटे के स्कूल में एनुअल ड्रामा सिलेक्शन बहुत सीरियसली और बहुत सीक्रेटली किया जाता है। एनीवन वुड थिंक दे आर सिलेक्टिंग द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। No teachers are allowed, parents be nahi allowed. The students appear before a panel of judges and selections are made. Somehow, the school ends up with a brand new hero and heroine every year. Principal को बहुत समझाने के बाद इन्होंने स्कूल का सीक्रेट बताया. She told us that they have theatre personalities, the school psychologist and herself present because they use a combination of techniques to select students for various parts. The theatre personalities, of course, judge the students' acting skills. The psychologist is there to decipher what the student feels. Confidence, stage fright, delight, cautious excitement. She's there to see if the kid can withstand the pressure of being a star. Last of all, principal ka role hai to see if the child is disciplined or not. The secret to finding a new star every year is to use a combination of analysis during this selection process. Canslim भी राइजिंग स्टार्स सिलेक्ट करते हैं एंड टू बी मोर स्पेसिफिक इट लुक्स टू आइडेंटिफाई ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जिनके प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट सिग्निफिकेंटली हायर देन द मार्केट एवरेज। Canslim say investors are able to select high growth stocks before institutional funds are fully invested in it and uses both fundamental and technical analysis for the same. Experienced investors ज़्यादा टाइम कैंडलिन यूज करते हैं, बट बिफोर वी गेट इनटू व्हाट दैट इज, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट व्हाट एग्जैक्टली CANSLIM यानी कि कैन स्लिम स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इट इंटेल्स। कैनस्लिम 7 क्राइटेरिया को कंसिडर करता है एंड लेट्स लुक एट व्हाट दीज आर वन बाय वन। C stands for current quarterly earnings per share. Obviously, potential investors are keen to see a high quarterly earnings per share. पिछले क्वार्टर से काफी ग्रोथ चाहते हैं। Traders and investors who use Canslim will only pass a stock or consider a stock if it shows a minimum of 20% growth in earnings per share over the previous quarter. The higher the better. Lekin, the minimum qualifying amount as per the norm is 20%. Okay? With C done, let's move on to A, which is A stands for annual reports. Now, annual reports must be scrutinized before investing in stocks. In the case of Canslim analysis, investors are looking for a 20% growth over the prior year or a 25% 3-year average for a company to qualify among the selected growth stocks. इसके बाद आता है N and N stands for new. कोई भी new product या new management Canslim process में examine किया जाता है। नए events like acquisitions and mergers or even a change in taxation that affects the sector are also taken into consideration as part of the Canslim analysis. उसके बाद आता है S. S stands for scarce supply. We are talking straightforward demand and supply economics here. सप्लाई की कमी और साथ में ज्यादा डिमांड, ज्यादा टाइम स्टॉक प्राइसेस के लिए अच्छी बात रहती है क्योंकि इससे स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। इसके बाद आता है L and L stands for leading versus laggard stocks. लीडिंग स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेटर देन द इंडस्ट्री एवरेज रहती ही रहती है। लैगिंग स्टॉक्स आर दोज हु अंडर परफॉर्म एज पर द इंडस्ट्री एवरेज। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर और नॉट अ स्टॉक शुड बी सिलेक्टेड। कैनस्लिम में सिलेक्ट होने के लिए द कंपनी नीड्स टू हैव एन RSI ऑफ अबव 30। इसके बाद आता है I, which stands for इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहां पे दोस्तों बैलेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और ज्यादा कम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। यू आर लुकिंग फॉर अ बैलेंस्ड अमाउंट एंड अ गुड अमाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बाय अ फ्यू वेल नोन नेम्स। यू वांट टू हिट बिफोर द कर्व, दैट इज बिफोर द कंपनी शेयर्स गो टू अ ton of institutional investors because then you have clearly lost your early mover advantage. इसके बाद लास्ट आता है M, which stands for market direction. Experts बोलते हैं कि 75% of the time stocks trade in the same direction as the market. Therefore, Canslim analysis will identify how much in sync with the market the given stock is. Investors will typically seek out stocks that outperform the overall market's performance during a bullish trend.
जैसा कि आपने देखा कि कैंसिल में बहुत काम है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये. It involves 7 separate sets of analysis, which is no joke for your average trader. It appeals more and more to experienced traders. अगर आप इसे मैनेज कर भी सकते हो तो ये मत भूल जाना कि it cannot offer you 100% guarantee that the stock will grow as predicted. जी हाँ, you're making a tremendously informed decision and covering all your bases with 7 whole different analysis. फिर भी the fact remains कि the stock market is unpredictable. इसे कभी मत भूलना और याद रखना जब आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चूज कर रहे हो. इन्वेस्ट ओनली व्हाट इज स्पेयर कैपिटल और हमेशा केयरफुल रहिएगा, नो मैटर हाउ श्योर यू फील. आज के इस पॉडकास्ट के टॉपिक में फिलहाल इतना ही, पर आपकी लर्निंग को रुकना नहीं चाहिए. चेक आउट आवर अदर पॉडकास्ट्स एंड लर्न मोर अबाउट मार्केट्स ऑन आवर वेबसाइट angelbroking.com. मिलेंगे फिर से एक नए पॉडकास्ट के लिए. तब तक के लिए अलविदा. सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. हैप्पी इन्वेस्टिंग.